As farm fires increase in northwest India, the AQI is likely to remain in the severe category. Earlier this morning, the AQI in Delhi was recorded at 413, putting India in the severe category. Delhi's average air quality index plunged to 468 on Friday from 392 on the previous day due to unfavorable northwesterly air that brings pollutants from stubble fires, calmer wind and dipping temperatures. Meanwhile, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has announced that in light of the rising pollution levels, all governments and primary schools in Delhi will remain closed today as well. The Delhi government imposed a ban on non-essential construction activities and on plying of BS3 petrol and BS4 diesel cars in Delhi, Gurugram, Faridabad, Ghaziabad and Gautam Budh Nagar. Meanwhile, joining us on the broadcast is my colleague Jai Prakash Bhati. He's joining us live from Faridabad. Jai Prakash, over to you. What is the situation like in Faridabad? All right, there seems to be some connectivity issue on Jai Prakash's end. Meanwhile, joining us on the broadcast live from India Gate is my colleague Brian Thomas. Brian, what is the situation like at the moment? Well, Delhi has become a gas chamber in itself. An air emergency has been brought in Delhi. If I show you around, you could see that this is the India Gate, which is around 100 meters away from me, and it's filled with haze. The Central Pollution Control Board also says the air quality across Delhi remains in the severe category. The AQI has been recorded in Anand Vihar, Jahangarpuri, Dwarka, even airport, more than 400, and this is definitely a very alarming situation. The AQI is most hazardous in places, and this dense layer, this is smog. These are the primary pollutants, PM 2.5 to 10, and these are the carbon that is there, the blanket. And just here also, if I show you here, this very end, which is around about 1 kilometer away from me, is the Rashtrapati Bhavan, which is clearly visible from here, but due to the dense smog that is there, it's not visible, which is causing a lot of problem, health hazards. Even doctors have given advisory. Doctors have given advisory especially for the elderly, for the kids, for the pregnant women to stay indoors. Only if it's necessary, come out of your house. If it's very necessary, then only come out of your house. If you come out, then wear masks, because the situation here is very bad. Like while I'm speaking also, I myself am having breathing problems, eye irritation, because of the dense blanket of smog around here also. The trees, which are 100 200 meters away from me, is filled with haze, is hazy because of the fact that the air pollution, the air quality index is above 400. It has gone to the severe category, and it is for the 7th consecutive day. It is in the severe category, and we from NewsX also urge the state governments to act upon this, because many people are also opting to leave the very national capital because of the extensive before Diwali, because of this extensive AQI, because that is causing a lot of problems to asthma patients, to elderly, pregnant women, and even a lot of health hazards are also causing. And yesterday also earthquake has also happened. So yes, Delhi is grappling with a lot of tension that is happening. Yes, Asabi, back to you. Absolutely, Akshad, absolutely, Brian, absolutely. In fact, I was also crossing India Gate, and I can attest to the fact that there was a thick layer of smog. And yeah, we can't escape reality. But meanwhile, joining us on the broadcast is my colleague Mahinder Mahi. He's joining us live from Noida. Mahinder, over to you. Give our viewers an understanding on the situation in Noida. बिल्कुल, देखिए, अगर नोएडा की सिचुएशन की बात करें तो स्थिति वही बरकरार है जो 2 दिन पहले थी, यानी कि जो नोएडा की आबो हवा है अभी भी दूषित है और बहुत ज्यादा दूषित है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है अभी भी नोएडा के कई इलाकों में, यानी कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं
कहीं 450 है, कहीं 520 है, कहीं 430 है। तो अब ये मान लीजिए जो स्थिति है गंभीर श्रेणी में बनी हुई है और लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बिगड़ता ही जा रहा है, पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। खासकर छोटे बच्चे, यानी कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह के वक्त, उनको बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। सांस लेने में उनकी आंखों में जलन हो रही है, क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है। उनकी शिफ्ट जो होती है सुबह 6 से 7 और 8 बजे के आसपास होती है। तो ये जो वक्त होता है, ये वक्त पॉल्यूशन का बहुत ज्यादा होता है। इस टाइम पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हावी होता है बच्चों पे। इसके साथ ही साथ देखिए, जो मॉर्निंग वॉक पे जो बुजुर्ग होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, वो जाते हैं, वो काफी परेशान है। उनका कहना है कि देखिए, जब हम बाहर जाते हैं तो हमारी आंखों में बहुत ज्यादा जलन होता है। जब हम ब्रीथिंग लेते हैं तब ये समस्या उत्पन्न होती है। साथ ही साथ जो डॉक्टर ने ये भी बताया कि ये जो जहरीला हवा है, ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कितना खतरनाक हो सकता है जब वो इनहेल करती हैं, और कहां तक हम बचेंगे, क्योंकि चारों तरफ नोएडा एनसीआर का जो क्षेत्र है गैस का चैम्बर हो चुका है। खतरनाक श्रेणी में वायु प्रदूषण पहुंच चुका है। तमाम जो सरकारी तंत्र थे वो आपको फेल नजर आएंगे, तमाम जो वादे थे वो आपको फेल नजर आएंगे। चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे हम नोएडा की बात करें, चाहे हम गाजियाबाद की बात करें, चाहे हम ग्रेटर नोएडा की बात करें, तमाम जगह केवल आपको पॉल्यूशन दिखाई देगा। जो धुंध है वो आपको दिखाई देगा। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि नोएडा दिल्ली का बॉर्डर है, और जिस तरीके से देखिए सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं, और जो तस्वीरें आपको दिखाई देगी, धुंधलापन आपको दिखाई देगा चारों तरफ। और ये जो तस्वीरें बयान कर रही है कि किस तरीके से जो ये पॉल्यूशन है ये लोगों के ऊपर हावी है, और किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो एक तरीके से नाकाम हुए हैं पॉल्यूशन को कम करने में। और हर साल की ये बात है, देखिए ये कोई पहली बार नहीं है कि इस साल की ऐसी बात हुई है। हर साल ये बात होती है कि पॉल्यूशन से लड़ने के लिए हमारे पास तमाम उपाय हैं, तमाम तरीके हैं। इस बार पॉल्यूशन कम होगा, इस तरीके से पॉल्यूशन कम होगा, और डीजल से पॉल्यूशन कम होगा, गाड़ी ऑफ, इंजन ऑफ, इससे पॉल्यूशन कम होगा। मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो तमाम वादे हैं जो गवर्नमेंट अपनी जनता से करती है, यानी कि जिनसे वो वोट लेती है, जिनसे वादा करती है, मुझे लगता है वो इनको एक साफ सुथरी हवा दे पाने में नाकाम साबित हो रही है। क्योंकि देखिए, ये हर साल का होता है कि दिल्ली की जो जनता होती है, चाहे नोएडा की बात करें, मतलब नोएडा की जो जनता होती है ये तरस जाती है अक्टूबर से लेकर दिसंबर, जनवरी एंड तक ये तरस जाती है कि एक साफ सुथरी हवा कैसे ली जाए, क्योंकि लगातार ये जो जहरीली हवा है वो इनहेल कर रही है और बीमार पड़ रही है अंदर से। आप यकीन नहीं मानेंगे कि सर्वे की रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की जो जिंदगी है, यानी कि जो आयु है वो 10 से 12 साल कम होती है इस हवा से। यानी कि जो हम ये जहरीली हवा ले रहे हैं, इससे हमारी आपकी तमाम जो दिल्ली एनसीआर में लोग रह रहे हैं जो अपने आप को फिट मानते हैं, सर्वे ने बताया कि हमारी जो एज है वो 10 से 12 साल कम हो रही है। यानी कि जो व्यक्ति 70 साल जिएगा अगर दिल्ली एनसीआर में रहता है, तो 52 साल, 55 साल या 60 साल जिएगा। ये स्थिति बन चुकी है, और ये पहली दफा नहीं है कि सरकारों को चेतावनी दी गई है, कोर्ट के आदेश आए कि आप करके रहे। हर कोई, चाहे हम एजेंसी की बात करें, सरकार की बात करें, तमाम पॉल्यूशन कंट्रोल की बात करें, एनजीटी की बात करें, तमाम ये जो एजेंसी है ये आंख बंद करके पूरे अक्टूबर के महीने पड़ी रहती है। इसको मतलब नहीं है किसी आम जनता से, क्योंकि इनके घर में, इनके दफ्तर में, इनके एसीओ में, इनकी कारों में एयर प्यूरिफायर लगा है, इनको तो साफ हवा मिल जाती है, इनको तो अच्छा खाना पीना मिल जाता है। मगर देखिए, देश में ऐसा भी तबका है जो सांस लेने में बाहर निकलता है, अच्छा खाना नहीं मिल पाता, वो कहां से उम्मीद करे। जनता ने आपको वोट दिया इसलिए ताकि आप उनकी मूलभूत सुविधाओं को अच्छे से दे, इसलिए नहीं कि जहरीली हवा लेने को हम लोग मजबूर हो जाए। देखिए, खासकर अगर नोएडा एनसीआर की बात होती है तो अक्टूबर माह में ही जो पॉल्यूशन का लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण जो दम घोटू हवा है वो लोग लेने के लिए मजबूर होते हैं। और ये अचानक नहीं बढ़ता है, ये सारी चीजें वन बाई वन होता है। मगर जो सरकारें होती है बयान देने से पीछे हटे। Indeed, absolutely, Mahindra. And even as we speak, you know, we have live visuals on your screens. You can see how smog has in fact engulfed the national capital. Visibility seems extremely poor. We are unfortunately breathing poisonous, toxic air. Meanwhile, joining us on the broadcast live from Faridabad is my colleague Jay Prakash Bhati. Jay Prakash, air pollution, a recurring subject. Every year we have the same conversation. What is the situation like in Faridabad? Jay Prakash, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? All right, there seems to be some problem over there, but
Meanwhile, joining us live from Connaught Place is my colleague Akshit Gupta. Akshit, what is the situation like in CP? Well, yes, if I can just tell you, the air quality in the national capital continues to plummet, and of course, Asavri, as we speak, also we can also feel that pretty feeling in our throat, in our eyes, because the air quality has now, of course, plummeted to severe category, due to which Delhi Heights have to bear the brunt of the rising air pollution. And of course, this is not a one-day affair. The people of Delhi have to deal with it every year, every year with this menace. And if I just tell you, the AQI has now plummeted to more than 400, and that's the average AQI. And in many areas, it's also more than 600, like Mundka, Rohini, Safdarjung. So of course, it remains a cause of concern. If we can just show you the visuals also, then of course you can see right here how the thick layer of toxic smoke has engulfed the whole of national capital, which is of course taking a toll on the health of people. Of course, they have to deal with a lot of respiratory problems. And here in Connaught Place also you can see how there are different AQI monitors, which shows us the AQI levels in the national capital. Of course, it's right now it's around 370, but it's the average. And when we talk about PM 2.5, particulate matter 2.5, then it's very hazardous because as per the WHO's recommended safety limit, it should be 60 micrograms, and it's 7 to 8 times more than that. So of course, it remains a cause of concern. And yesterday, the Delhi Environment Minister Gopal Rai also held a meeting, an emergency meeting with the officials of different departments, and said that GRAP 3 has been invoked in the national capital, which further leads to banning of construction and demolition activities, mining activities, grinding activities in Delhi to curb pollution. And also he said that the measures are also being taken to curb the vehicular pollution, because that also remains one of the major causes when it comes to rising pollution in Delhi. And schools also have been closed for 2 days till primary classes till 5th grade. And BS3 petrol and BS4 diesel cars have been banned in the national capital. And of course, there are mechanized sweeping machines. So there are 52 such machines which are going to be run for 12 hours now. And water sprinkler machines are also going to be functioning for 12 hours. And there are smoke guns also. But still, the larger question remains that if we will be back next year again here and posing the same questions and talking about the same thing, because this is not a one-day affair. The Delhi Heights have to bear the brunt of this rising air pollution. Indeed, Akshit, indeed. I'm just going to go to my colleague Jayaprakash Bhati right now. But meanwhile, if I could request you to if you have some people around you and they could speak after we hear the situation in Faridabad. I'm going to come back to you, Akshit, try to get some people with you. Meanwhile, I think now we have Jayaprakash Bhati live with us from फरीदाबाद. जयप्रकाश, बताइए फरीदाबाद में स्थिति क्या है अभी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, फरीदाबाद में पिछले एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो एक हफ्ते से लगातार फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिलहाल की अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो 500 के करीब जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दर्ज किया जा रहा है, जिसके चलते आम जन को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह से जो है पोल्यूशन की जो सफेद चादर है उसने अपना बेकार रूप जो है वो धारण किया हुआ है। और जिसके चलते जो है सवालिया निशान उन अधिकारियों पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो हर साल की तरह जो है वो दावे करते हैं कि शहर के अंदर स्थिति जो है वो नहीं बिगड़ने दी जाएगी, जिसके चलते आम जन जो है वो अस्पतालों की तरफ जो है रुख कर रहा है, क्योंकि इस पोल्यूशन से बढ़ने से अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। क्योंकि दमा, अस्थमा और छोटे बच्चे जो हैं उनको इससे सीधे तौर पर जो है नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकारें जो है लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि जिस चलते पोल्यूशन जो है लगातार बढ़ रहा है। फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने से जो आपको बता दें, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार खराब हो रहा है। फरीदाबाद में आम जन जो है इन दोनों बेहद परेशान। और सफेद चादर आपको दिखा देते हैं, जिस तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 के करीब था, और आज की अगर बात की जाए तो आज जो है 543 के करीब जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो देखा जा रहा है। और सफेद चादर जो है वो चारों तरफ आपको देखने को मिले, क्योंकि नेशनल हाईवे की बात की जाए या बाईपास की बात की जाए तो जगह जगह जो है
कंस्ट्रक्शन के काम जो है वो चल रहे हैं और जिनके चलते जो है आम जन जो है इन दिनों काफी परेशान जो है वो दिखाई दे रहा है। और ऐसे में सरकार जो है लगातार कह रही है कि पोल्यूशन को रोकने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन फिर भी पोल्यूशन जो है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद औद्योगिक नगरी में सबसे पहले आता है और इसमें जो कंपनियां हैं वो कंपनियां भी जो है वेस्ट मटेरियल उनको जला रही है, जिससे चिमनी से धुआं निकलने वाला जो है वो भी पोल्यूशन को जो है वो बढ़ावा दे रहा है। और ऐसे में अगर लगातार इसी तरीके से पोल्यूशन बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में लोगों की परेशानियां जो हैं और ज्यादा जो है वो बढ़ जाएंगी। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.